I think he's your HR, sir, Chef Amit? Yeah, Deepak ji. And he is Mr. Dikshantrat. He is our corporate chef, and myself, Gayatri. Yeah. Okay. So we are our cafe. We are running a multiple cafes. We have multiple cafe outlets in Bhubaneswar, and we are also planning to open it in all in the various states also, like Maharashtra, Andhra Pradesh, and all, and also in abroad, as we can say. And so right now we are looking for some hospitality staff for these cafe outlets, and mostly we're looking for the northeast side, as I told you earlier. And apart from that, we also were looking for 10, Commis chefs, like Commis 2 and Commis 3, like this. So, and Mr. Dikshant, who is totally looking after all this, staff management and all, and he can better tell you about our requirements, about the staff requirements, what qualities he is actually looking for. So I would like to Mr. Dikshant to, to brief about this to them. All right, Chef. First of all, hello, good afternoon. So I'll just give you a very simple brief. So we are a hospitality brand which has multiple outlets. One, we have a QSR, and another one, we have two cafes currently. One is under construction, one we are running. One, we have a cloud kitchen, and another one is institutional catering. Right. So at this point, we're running all of them. One of our bakeries is also under construction. So currently, our whole operation is limited to Bhubaneswar, but by the middle of next year or so, we'll be expanding to Indore and Chandigarh as well. Right. So the problem that we face mostly with Odisha staff is that because they're local people, they normally show up to work and then at any their own convenience, they leave saying that they're going to, to home or something, and they don't return. And it causes an issue in our operations, day-to-day operations, right? So our founder, Captain Vikas Patra, he actually got a bunch of people from Nepal, and they have been very loyal and very faithful to the company. So because of that notion, he is very adamant about the fact that if we get staff from Northeast, they'll be much more helpful towards you. And throughout my career as well, I've found, I don't want to be a stereotype, but I've found that people from that area, they are very loyal and very hardworking, right? So it was absolutely, absolutely, sir. सर देखिए, हमारा जो केटरिंग किचन है वो इंडो चाइनीज मेन्यू है, नॉर्मल जो डे टू डे ऑल अराउंड द कंट्री चलता है वैसे। हाँ, बट मुझे एक लर्निंग कर्व वाला बंदा भी चाहिए, बिकॉज वी ऑल्सो सर्व नाइजीरियन स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनली स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं हमारे उस इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे हम केटरिंग करते हैं। तो उनका नाइजीरियन बैकग्राउंड का खाना है। वी हैव अ शेफ हु इज अ नाइजीरियन मास्टर शेफ, सो ही टेक्स केयर ऑफ इट, बट ऑफ कोर्स ही विल नीड हेल्पिंग हैंड्स। तो ऐसा बंदा चाहिए जो समझे खाना और नाइजीरियन खाने में भी हेल्प कर दे। तो इट्स वेरी सिमिलर टू इंडियन फूड, बट वही है, वेजिटेबल्स और मीट का समझ होना चाहिए थोड़ा। याम का फूफू, फूफू, वो उसको याम को बीट कर करके बनाते हैं वो लोग। हाँ जी। हाँ हाँ, वो ट्रेंड बन चुका है सोशल मीडिया के लिए। Two, 3 points I want to understand. What is the salary budget for the commis and for service staff? So currently, according to the cost of living of Bhubaneswar, our cap is on 15,000. But of course, 15 we will give to the most like experienced banda जिसको अच्छे से समझ आ जाए. It will begin around 9 or so. So 9 to 15 you can take. Depends on how the person is performing and how their experience and understanding of the craft is. उस हिसाब से. नहीं, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरा कैप 15 है।
बट ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे जो मैंने क्वालिटी देखी है उस हिसाब से 9 to 15 है सर। वो तो है। हाँ नहीं, इस बजट में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं एक्चुअली प्रैक्टिकल जो सिनेरियो है मैं बता देता हूँ। 4 साल से होटल मैनेजमेंट कॉलेज सारे बंद था। हाँ मार्केट में बहुत बड़ा गैप है आज के डेट में, क्योंकि हम रिक्रूटमेंट कर ही रहे हैं। अपने पास मोर देन 50 क्लाइंट्स है। इसके अंदर होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, कैफे है, क्लाउड किचन है। पैन इंडिया में अपना काम चल रहा है। और आज के डेट में अभी अपना जो भी, इवन फॉर स्टूवर्ड स्टूवर्ड वी आर पेइंग अराउंड 18 to 20,000। मार्केट में ओके है ही नहीं, मतलब आप आदमी तो ले लेंगे, वी विल सेंड यू द बॉयज फ्रेशर्स, बट दे विल बी गुड फॉर नथिंग, यू हैव टू ट्रेन देम, इट विल टेक। ओके। ये रेंज अभी, सैलरी रेंज कॉमी 2 कॉमी 1, ये रेंज आपका बैठेगा 18 से 25 के बीच में रहेगा। ओके इसमें अंदर डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, क्वालिटी, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है वो भी डिपेंड करता है। कोई समवन वर्किंग इन था। अग्रेड। हाँ नहीं। हाँ जी। और सेकेंडली, आप जो नॉर्थ ईस्ट से आप कुक्स जो ढूंढ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से कुक आपको मिलेगा नहीं। नॉर्थ ईस्ट से आपको जो मिलेगा सर्विस, कि ओके नॉर्थ ईस्ट पीपल दे आर फेमस फॉर द सर्विस एंड नॉट फॉर द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आपको तो और कहीं नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, नेपाल नेपाल हो, कहीं से हायर करना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कुक का ढूंढ रहे हैं, मुझे पता नहीं है। मैंने जहां तक देखा है नॉर्थ ईस्ट में जो है वो सर्विस के लिए अच्छे लड़के लड़के हैं। वी हैव लॉट ऑफ स्टुअर्ड एंड स्टुअर्डेट्स, फीमेल स्टुअर्ड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। बट कुक बहुत अच्छा कुक नहीं है। कुक जापानीज कुक्स वगैरह है वहाँ पे। ओके। ऑफ कोर्स। ठीक है, क्योंकि फेयर एनफ। एंड एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अपने पास जितने भी स्टाफ है सारे क्वालिटी स्टाफ है। क्वालिटी स्टाफ मीन अपना